Hello, my dear students. Welcome to this introduction lecture of your paper 4 of CS Executive Tax Laws. Now, before we go ahead and understand what this subject is about, let us first understand what marks are allotted and what would be the paper pattern for this particular paper 4. Now, your CS Executive Group 1 consists of 4 papers. The fourth paper amongst this is tax laws, which comprises of 100 marks. Now, this entire paper is MCQs based paper with negative marking. One wrong answer would cost you 0.25 marks. Now, introduction to tax laws. Just concentrate on the name of the subject, tax laws. Okay. Now, first let us understand what is meant by laws, how are laws drafted, okay, and then we will come back to the tax laws. So when we speak of laws, the first most important thing that comes to our mind is the Constitution of India. Every law that is enacted in India has its source in the Constitution of India. Now, Article 245 of Indian Constitution says, subject to provisions in Constitution, Parliament may make laws for whole of India. Parliament may make laws for whole of India. अब कानून कानून बनाता कौन है? कानून वो बनाते हैं जिन्हें हम वोट करते हैं, राइट? हम वोट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट में विधायक एमएलए बैठ के ड्राफ्ट बनाते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज बैठ के अपने लॉज के ड्राफ्ट बनाते हैं. नाउ देयर इज स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं. नाउ who is actually going to approve the laws made by the state government, by the central government? It's the Parliament of India. It is the supreme legislative body in India. जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, जो एक्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, इनका ड्राफ्ट पार्लियामेंट में अप्रूव होता है. बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दो वो ड्राफ्ट कंसिडर करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं एंड देन they pass that particular bill and it goes ahead to the president for their assent. Okay, so the laws are prepared by the central government and the state government, which are further passed by the parliament. So let us understand how are these laws prepared in India. On public demand, on ideologies, various issues pop up. These issues are converted in the form of bill. जो भी changes लोगों को लगता है कि हमारे एक्ट में आने चाहिए, उनको बिल के तौर पे बनाया जाता है. देन इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद वो पर्टिकुलर बिल पास होता है प्रेसिडेंट के पास फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. वंस द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट, दैट पर्टिकुलर बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्ट. So this is the entire procedure. Okay, this is the entire procedure of laws coming into effect. Now let me tell you one thing. अब एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए बिल भी होगा, एक्ट भी होगा, राइट? बिल जरूरी नहीं है कि बिल जो भी प्रपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एज इट इज एक्ट बन जाए. जो पार्लियामेंट को लगता है, जो पार्लियामेंट को करेक्ट लगता है, जो पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं, बिल्स के वही पॉइंट्स एक्ट में कन्वर्ट होते हैं. So what is applicable? So what should we refer to? What should be our understanding on? Our understanding should be on the act, because जो at the end survive करता है, it is the act. It is the act that we have to refer and we have to understand the provisions of law. Now, आर्टिकल 245 हमें क्या बोलता है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज गोइंग टू प्रिपेयर लॉज फॉर होल ऑफ इंडिया. अब अपने पास क्या है? अपने पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. टू गिव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स कि कौन किस मैटर्स में डील करेगा, द आर्टिकल 246 हैज गिवन अस अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 इन व्हिच there is a particular demarcation कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मैटर्स में डील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स में डील करेगा. सो दिस शेड्यूल 7 हैज 3 लिस्ट्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. Now, union list gives powers to
Central government. Central government ke powers. Which are these central government ke powers? Banking, defense, then you even have Indian railways and foreign trade, etc. These are various, there are various matters which are covered under union list. These are a few of them. Banking, then defense, railways, foreign trade, these matters. Now let's see what state list, what powers have been given to the state. Agriculture, police, prison, liquor, all such powers have been provided to state list. Now, state government rather. Now, third list is concurrent list. Concurrent list says what? Each state government and central government will come in unification with each other, and then they would be handling certain matters. Just like you have irrigation, you have forests, then you have trade unions and various such other laws. Just like GST. Even GST has been given by in the concurrent list. मतलब क्या? State government और central government एक दूसरे के साथ in combination, in unification, they will be working on those particular areas. So what did we see? That list for 245, sorry, Article 245 says that Parliament is going to pass to the President for its assent, and then after the assent of President क्या होता है? वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है. फिर आर्टिकल 246 ने क्लियरली बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है. क्लियर डिमार्केशन ऑफ ड्यूटीज हैव बीन गिवन. नाउ अगर हम नेम ऑफ सब्जेक्ट देखें, टैक्स लॉज. लॉज क्या है ये तो हमने पढ़ लिया. नाउ लेट अस फोकस on the word tax. What is actually meant by tax? Tax. This word has its origin from the Latin word taxo. What does taxo mean? Taxo means rate of tax. Okay, so the origination word is taxo. Now, what do you actually mean by tax? Tax is a compulsory financial charge which is collected by government of India from the mango people, the aam aadmi of the country. Okay, so the government collects tax from the mango people, the aam aadmi of the country. अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि government has to do what? Collect taxes from the people? I will tell you why. We want tall skyscrapers to flaunt about, milky smooth roads to drive. हमें highways चाहिए, हमें flyovers चाहिए, so for smooth connectivity. Not only this, we need continuous supply of water so that our domestic life is not disturbed at all. We need faster, cheaper and good means of transport and travel to provide all these services to the public, to protect them, to provide their defense services. The government of India needs funds, needs finances to provide all these services to the public. And so the government of India collects taxes from the people. Government अपनी प्रजा से tax collect करती है और यही पैसा अपनी प्रजा के हित के लिए इस्तेमाल करती है. Okay, so this is the reason why government of India collects taxes from the people. So till now, what did we see? What did we see? We saw what do you mean by tax? We saw why the government collects tax. It is the very reason why, with the help of these tax, with the help of the money collected in the form of taxes, government अपने भारत को सपनों का भारत बनाना चाहता है. One ideal nation to provide the best infrastructure to the public, where they can flourish, where they can grow, okay, by leaps and by bounds. Okay, so this is the importance of the money collected by the government. So this is the reason why tax is collected by the government. Okay, now further as we go ahead, we will see what are the different types of taxes. There are two main types of taxes: direct tax and indirect tax. Direct tax means the tax which is directly collected by the government of India from the public. And indirect tax means the tax which is collected via and not directly by the government. Let me explain this to you with the help of a small simple example. Now, just observe what happens with direct tax. Say you, Mr. X has earned rupees 100. When government directly charges tax on this rupees 100 earned by Mr. X, it is known as direct tax. But in case of indirect tax, what happens? The tax is collected via. Let me give you a small example. Say Mr. X
Mr. X wants to buy a particular product. Okay, so he picks up rupees 100. He goes to the shopkeeper. Shopkeeper को उन्होंने 100 rupees दिए. Okay, और बोला so and so items दे दो. ओके नाउ जब उन्होंने वो आइटम्स बाय किए तो शॉपकीपर ने उनके हाथ में बिल थमाया. अब बिल में लिखा क्या था? बिल में लिखा था फॉर आइटम्स ₹100 एंड टैक्स ₹20. से ₹20. सो टोटल बिल का अमाउंट आया 120. सो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने 120 रुपीज दे दिया शॉपकीपर को, अपने आइटम्स उठाए और वहां से निकल गया. अंडरस्टैंडिंग? सो 100 रुपीज के प्रोडक्ट्स के लिए उसने 120 रुपीज पे किए. तो शॉपकीपर ने क्या किया? 100 रुपीज अपने पास रख लिए और 20 रुपए दे दिए गवर्नमेंट को. मतलब एक्चुअली क्या गवर्नमेंट ने अपने से टैक्स वसूल किया? डिड गवर्नमेंट कलेक्ट मनी फ्रॉम मिस्टर एक्स? यस, डिड कलेक्ट टैक्स. बट क्या डायरेक्टली एक्स के पास से लिया? नहीं. इट केम वाया फ्रॉम द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट. Okay, so this is how the direct tax and the indirect taxes function. Okay, now direct taxes में usually cover होता है income tax, international tax, and indirect taxes में cover होता है GST, customs, etc. Okay, yes. Now further, let's come to Article 265 of Indian Constitution. Before we go ahead, let's take a quick revision. अब तक हमने क्या किया? क्या देखा हमने पहले कि लॉज कैसे फ्रेम होते हैं? बराबर है. लॉज फ्रेम होते वक्त हमने आर्टिकल 245 देखा जो बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर्स है. फिर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जहां पे हमको 3 लिस्ट्स दिए गए हैं. ओके, फिर हम आगे आए. फिर हमने देखा कि टैक्स मतलब क्या, उसका ओरिजिन, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स. देन वी आल्सो सॉ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो टैक्स can be levied or collected except by authority of law. Okay, क्या बोला गया है? No tax can be levied or collected except by authority of law. मतलब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते except. किसको छोड़ के? कौन कलेक्ट कर सकता है टैक्स? अथॉरिटी. इस अथॉरिटी को किसने अपॉइंट करना चाहिए? लॉ ने अपॉइंट करना चाहिए. दिस लॉ मीन्स व्हाट? This law means the respective act. जो एक्ट पास होते हैं, इस एक्ट ने, ये जो पर्टिकुलर एक्ट्स होते हैं, they give powers to particular authorities, particular bodies to collect taxes. Then these taxes are thereby levied and collected. So let's once again understand. There's a law, there's an act. ये एक्ट अथॉरिटी देगी पर्टिकुलर बॉडीज को एंड देन दीज बॉडीज विल लेवी एंड कलेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवी एंड कलेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड. अब अगर आपको आपके स्कूल के दिन याद होंगे तो लेट मी टेल यू, दिस मंथ ऑफ दिसंबर इज ऑल अबाउट कल्चरल कॉम्पिटिशंस, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस. तो क्या होता था? Your awards are declared, who are the winners, who has secured prize 1, prize 2, prize 3. बट क्या हमें इमीडिएटली वो लोग अपने सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते थे? नहीं. दैट वाज डन ऑन द एनुअल डे, राइट? मतलब डिक्लेरेशन इज डन ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, but distribution of prizes is done on the annual day. This is exactly what I want to say with the meaning, with the words levy and collected. Levied means जिस दिन impose हुआ, जिस दिन declare हुआ, और collect कब किया जाता है? अपने due dates पे उसको collect कर लिया जाता है. Okay? फिर कोई willingly, okay, अपने what do you mean? I mean कोई ईमानदारी से, राइट? कोई ईमानदारी से टैक्स भरता हो तो राइट, दैट्स वेल एंड गुड इनफ. अगर कोई ईमानदारी से टैक्स ना भरे और अगर कोई टैक्स इवेड करे, अवॉइड करे, तो गवर्नमेंट को राइट है, उस पर्टिकुलर बॉडी, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को राइट है कि वो उससे वसूल कर सके. सो कलेक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एज वेल एज recovery. So this is all about Article 265 of Indian Constitution. So Indian Constitution के क्या बोलता है कि there is an act में there is a body, this authority can levy or collect taxes. Okay, yes. Further, I want to take you back to Article 246 जिसमें हमको 3 लिस्ट दिए गए थे. ये तो हमने देख लिया
ओके कि लिस्ट 1 होती है, लिस्ट 2 होती है, लिस्ट 3 होती है। अब हम देखेंगे कि हम जो इनकम टैक्स देखने वाले हैं, राइट? डायरेक्ट टैक्सेस, वी सॉ द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अपने सिलेबस में क्या कवर्ड है? इनडायरेक्ट सॉरी इनकम टैक्स कवर्ड है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी एंड customs. ये income tax, GST, customs will be covered under which list? Let us see. So Article 246 of Indian Constitution says that list 1 is a union list, जहां पे पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। यूनिट लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स होता है, और लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कम इनटू यूनिफिकेशन। ओके, सो अगर हम लोग देखें कि लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 को, एंट्री नंबर 82 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है टैक्सेस ऑन इनकम, राइट? टैक्सेस ऑन इनकम other than agriculture. So taxes on income is nothing but income tax. मतलब income tax is covered under list 1. मतलब income tax कौन collect कर सकता है? Income tax central government collect कर सकता है। आगे उन्होंने क्या लिखा है? अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसका है? किसका है? कहां पे है? देखो, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इज राइट देयर इन लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट का राइट है। एंड व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, जीएसटी इज कलेक्टेड बाय हूम? in list 3 concurrent list, that is by central government and state government in unification. Understanding? So अब तक हमने क्या देखा कि टैक्सेस, अब जो हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखा है, अब हमने देखा कि किसका कौन सा राइट है, मतलब कौन हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन हमसे जीएसटी कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके। एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड फर्दर। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब टैक्स मतलब क्या हमने समझ लिया, राइट? एक्ट मतलब क्या हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 1961. What is the importance of this year 1961? What is the history of Income Tax Act 1961? What happened is during independence in the year 1857, there was a first war of independence जब इंडियंस एकदम फुल जोश में रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एज सच ब्रिटिशर्स को क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के पास फंड्स, रिसोर्सेस कम पड़ने लगी। तब जेम्स विल्सन came up with Income Tax Act in 1860. Okay, then that was the first time when income tax was properly in a legislative form collected in 1860, and then further they came back in 1961. A reformed, refined act came into picture in 1961. Actually, अगर ऐसा देखा जाए तो even before the Britishers, there were kings. These taxes dates back to even Chanakya's regime. Okay, the Arthashastra also mentions about the collection of taxes. Okay, yes. So this is all about the history of Income Tax Act 1961. Now you must be wondering that 1961 का एक्ट आज कैसे एप्लीकेबल होगा, राइट? अब तो तौर तरीके बदल गए 1961 से, लोग बदल गए, इकोनॉमी बदल गई, ख्यालात बदल गए, फिर 1961 का एक्ट आज हमको एप्लीकेबल 2020 में कैसे होगा, 2021 में कैसे होगा, राइट? सी रिमेंबर, जैसे जैसे चेंजेस होता है economy में, all the changes in the economy are also, these changes are brought about in the act also. Act remains same, but as and how periods change, needs arises, changes are made to the act. Okay, understand? 1961 का एक्ट है, एक्ट वो सेम ही रहने वाला है, बट जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होगी, जैसे जैसे चेंजेस हम लोग उस एक्ट में करते जाएंगे, राइट? विल बी रीबिल्डिंग द एक्ट। ओके, दीज चेंजेस जो हम उस एक्ट में करेंगे उसे कहा जाता है अमेंडमेंट्स। ओके, क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट्स। अब ये जो अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स प्रेजेंट कहां होती है? ओके, बनती कैसे है? ये अमेंडमेंट्स बनती है बजट में। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय बजट। हमें ये तो पता है कि फरवरी का महीना है, फेब्रुवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एवरीवन इज ग्लूड टू द टेलीविजन वेटिंग, ओके, कि इस बजट में क्या आएगा, व्हाट प्रपोज चेंजेस, अपने क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं,
हमें क्या क्या रेगुलेट करना पड़ेगा, ये सब देखा है, एनालाइज किया है, पर कभी समझने की कोशिश की है कि ये बजट आखिर होता क्या है, राइट? ये बजट आखिर होता क्या है? टू कोप अप विद द करंट सिनेरियो, to to develop the economy, to take further steps, actions to convert the economy towards a developed economy, budget has been prepared. अब budget are of two types, interim budget and final budget. अब interim budget क्या होता है? जिस गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, ओके, वो गवर्नमेंट कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है. देन व्हाट हैपेंस? आफ्टर 5 years a new government is elected. फिर क्या होता है उस 5th year में? उस 5th year में, in the year of election, what happens? There is an old government जो छोड़ के जा रही है, right? And there is a new government which is stepping in. करेक्ट? सो एज सच इस स्विच ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है? बजट तो पेंडिंग नहीं रख सकते, राइट? इसलिए इंटरिम बजट डिक्लेयर किया जाता है. सो इंटरिम बजट इज द बजट व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन द ईयर ऑफ इलेक्शन एंड इट इज वैलिड फॉर 6 months. एज अगेंस्ट final budget comes every year. It is declared on 1st of February and it is presented by the finance minister. Okay, now tell me who is the finance minister of India currently? Come on, my dear students. It is Srimati Nirmala Sitharaman ji. She is the first lady finance minister of India. Okay? Yes. Now, further, budget. So budget क्यों लाया जाता है? बजट लाया जाता है अमेंडमेंट्स करने के लिए. अब जैसे 2 प्रकार के टैक्सेस है, तो अमेंडमेंट्स भी तो 2 प्रकार के होंगे, बराबर है? अमेंडमेंट्स विल बी इन द डायरेक्ट टैक्सेस आल्सो एंड इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो. अब समझते हैं कि इन अमेंडमेंट्स को एप्लीकेबल किस प्रकार से किया जाता है. ओके, इन अमेंडमेंट्स को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है. सो सपोज डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट्स है, they are applicable from first day of next year. Okay, understand? अगले साल से इसके इफेक्ट्स हम बजट के जो इफेक्ट्स है वो हम एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर. और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कब एप्लीकेबल होते हैं? जस्ट राइट फ्रॉम मिडनाइट. जैसे पेट्रोल प्राइसेस, अगर हमें पता चला पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है तो वो रात को 12 बजे से बढ़ती है, राइट? तो क्या होता है? वी स्टैंड इन इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्यू just to fill petrols in our vehicles. Do you understand? So this is nothing but direct taxes amendments and application of indirect taxes amendments. अब जो है स्टूडेंट्स जून 21 के लिए अप्लाई होने वाले हैं, ओके, उनके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? उनके लिए बजट एप्लीकेबल होगा 1 साल पहले वाला, बराबर है ना? क्योंकि 1 साल के बाद हम एग्जाम, मतलब हम जो आज एग्जाम दे रहे हैं वो उसके लिए 1 साल पहले वाला बजट एप्लीकेबल होगा. दैट इज बजट 2020, बराबर है? मतलब जून 21 की एग्जाम, तो बजट 1 साल पहले वाला बजट 2020. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? सो हम कहाँ थे? 1961 अपने एक्ट का ईयर है, बराबर है? 1961 पुराना एक्ट, नए कोप अप करने के लिए चेंजेस, अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट. अमेंडमेंट्स डायरेक्ट टैक्सेस में अलग होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अलग होंगे. डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट 1 साल बाद अप्लाई होंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट कब अप्लाई होंगे? राइट फ्रॉम दैट डे मिडनाइट. ओके, इसलिए हमारे लिए, हम जो जून 21 के अटेम्प्ट के लिए अप्लाई होने वाले हैं, उनके लिए बजट कौन सा अप्लाई होगा? बिल्कुल 1 साल पहले वाला, दैट इज बजट 2020. ओके, यस. फर्दर, अब हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में से क्या देखा? टैक्स मतलब क्या देखा? एक्ट मतलब लॉ मतलब क्या देखा? 1961 मतलब क्या देखा? नाउ लेट अस फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकम. इनकम. व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. कोई बिजनेस करता है, राइट? कोई किसी के यहाँ पे नौकरी करता है, राइट? सैलरी इनकम अर्न करता है. कोई खुद का कैपिटल डाल के बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, राइट? कोई अपना एसेट रेंट पे देके, किसी के पास कोई घर है वो रेंट पे देके रेंट अर्न करता है. किसी के पास हाउस है तो वो बेच के, सेल ऑफ एसेट करके इनकम अर्न करता है, करेक्ट? किसी के पास शेयर्स है तो उस शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो उस शेयर्स पे डिविडेंड इनकम अर्न करता है. किसी का कोई शेयर्स को ट्रेडिंग करके, परचेस और सेल करके उसमें प्रॉफिट कमा के इनकम अर्न करता है. कोई किसी और के शेयर्स की ट्रेडिंग करके कमीशन इनकम अर्न करता है, राइट? Right? So there are thousands and thousands of sources of income. So how does this income tax act cope up with such a lot number of sources of income?
इनकम टैक्स एक्ट सारे इनकम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है ब्रॉडली. Okay, so there are 5 heads of income. Let us see which are these 5 heads of income. First is salary. जब हम किसी के पास नौकरी करते हैं, जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, तो उसे कहा जाता है, तो दैट पर्टिकुलर इनकम जो सैलरी हम अर्न करते हैं उसे कवर किया जाता है अंडर द हेड सैलरी. जब अपने पास कोई घर है और हम वो किसी को रेंट पे देके रेंट इनकम अर्न करते हैं, तो उस रेंट इनकम को कवर किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में. जब हम खुद का कैपिटल डाल के बिजनेस एंड प्रोफेशन रन करते हैं और उसमें से प्रॉफिट्स एंड गेन्स अर्न करते हैं, तो उसको कवर करते हैं पीजीबीपी के हेड में. जब अपने पास कोई एसेट है, ओके, कैपिटल कोई एसेट को बेच के हम कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं, ओके, सो देन दैट इज कवर्ड अंडर कैपिटल गेन्स. और जो भी इनकम इस चारों हेड्स में नहीं बैठती, वो रेसिड्यूअरी हेड में जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, इनकम है पर ऊपर के 4 हेड्स में नहीं कवर होती, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, यहाँ पे नहीं कवर होती, तो कहाँ पे कवर हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बट हम कुछ छोड़ेंगे नहीं भैया, टैक्स तो हम लेने ही है. ओके, ऊपर के 4 हेड्स में नहीं बैठी इनकम, तो क्या हुआ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उस पर से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे. Understanding? So this is all about the Income Tax Act 1961. Now, what is the name of the subject? Come on, let's once again with me. Tell me, it is tax laws or it is tax act. टैक्स लॉज बोल रहे हैं. द वर्ड इज लॉज. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट लॉज, वी ऑल्सो हैव टू रेफर टू द रूल्स, द नोटिफिकेशंस, द सर्कुलर्स एंड द रेलेवेंट केस लॉज. ओके, सो जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे, तो वी नॉट ओनली हैव टू रेफर टू द इनकम टैक्स एक्ट, बट ऑल्सो हैव टू रेफर टू द रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड द रेलेवेंट केस लॉज फ्रॉम time to time. Now, let us understand what is meant by these act, rules, notifications and circulars. Act contains the provisions of law. मतलब हमने एक्चुअली कौन से चेंजेस लाने के लिए एक्ट बनाया है, ओके, किस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया है, वो प्रोविजंस यहाँ पे आ जाएंगे. राइट मीन्स इट इज लॉ को क्या चाहिए ये हमें एक्ट में बताया है, बट हमें वो कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, ये बताया गया है रूल्स में. सी, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्ट कहता है कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, सो व्हाट डज द रूल से? एक्ट इज सेइंग फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन द ड्यू डेट. रूल्स क्या बोलता है कि वो ड्यू डेट कब है, कौन से फॉर्म में फिल करना है, किस प्रकार से फिल करना है, कौन से वेबसाइट पे फिल करना है. डू यू अंडरस्टैंड? सो हाउ टू एक्चुअली फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, okay, this is given to you in the rules to the in the income tax rules. Do you understand? Okay, so rules speak about the implementation of law. Okay, further notifications and circulars. Okay, एक बहुत important चीज. अब मुझे बताओ, अगर if you all of us mostly have Facebook accounts. Now tell me, अगर Facebook में किसी ने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया, तो हमें क्या आता है? What pops up on the screen, mobile screen? A notification. So whatever changes have been done to all these accounts we are involved into, उनका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे आता है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर एस्टैब्लिश्ड एक्ट में, एग्जिस्टिंग एक्ट में हमको कुछ चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस हम किस प्रकार से करेंगे? वाया व्हाट shall we bring these changes? Via notifications. Okay, then circulars क्या है? अब एक मुट्ठी भर लोग 130 करोड़ जनता के लिए लॉ बनाएंगे, बराबर है? मतलब एक लॉ बनने के बाद 130 करोड़ की जनता उस लॉ को पढ़ेगी, उस लॉ को समझेगी, करेक्ट? और हर किसी की इंटरप्रिटेशन की, समझने की ताकत अलग होती है, बराबर है? राइट, कोई भरा हुआ ग्लास देखता है तो कोई खाली ग्लास देखता है. Right? So in order to bring a clear understanding of law, कि law actually क्या चाहता है और law को आपको किस प्रकार से समझना है, इस clarification,
इस क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन कहाँ पे आता है? सर्कुलर्स में आता है. सो क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल डाउट्स are done of all doubts of what? Of the act and the rules are done in these circulars. Okay, so when we speak of Income Tax Act 1961, it is just act along with rules, notifications, circulars, and case laws. What do you mean by rules? Rules means implementation of law. What do you mean by notification? Changes जो भी laws में, act और rules में आएंगे. And what is circular? Clarification of any doubt in interpretation and understanding of that particular act or rules of that act. Okay? अब हम आगे देखेंगे the Income Tax Act 1961. Now, अब हमने सारा बैकग्राउंड देख लिया. हमने देखा कि हम जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो हमको किसके साथ उसको पढ़ना है? रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, सर्कुलर्स पढ़ना है. अब चलते हैं अपने कोर एक्ट में. Okay, in just another few minutes I will be telling you how this Income Tax Act is going to be designed and how do we have to study. Okay, yes, the Income Tax Act 1961 comprises of 298 sections. What is the meaning of this word section? Section means division of act in a systematic manner. जब एक्ट को सिस्टमैटिक सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है तो उसे कहा जाता है सेक्शन. ना, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस? किस प्रकार से सीक्वेंस को सेक्शंस को अरेंज किया जाता है किसी एक्ट में? सेक्शन 1 यूजुअली डील्स विद द वेयर एंड व्हाट ऑफ द एक्ट. मतलब उस एक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बोलता है. ओके, शॉर्ट टाइटल. अब एक्ट क्या, विल एक्ट डील ओनली विद नंबर्स? नो, उस एक्ट को नाम भी तो चाहिए, राइट? शॉर्ट टाइटल, उस एक्ट का नाम क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, किसको अप्लाई होगा, एंड कमेंसमेंट कब अप्लाई होगा, SEC. सो डू यू सी सेक्शन का SEC कहां से आया है? राइट हियर, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. So section SEC, short title, extent and commencement. And section 2 usually, section 2 deals with the definitions of the Income Tax Act. The main technical jargons जो हम लोग यूज करेंगे, technical words जो यूज करेंगे, जिनको रेफर करेंगे, उनके मीनिंग को यहाँ पे हमें दिया जाएगा. Okay, so this is all about Income Tax Act 1961. A short description, a short explanation of this particular act. Okay, तो हमारा पेपर 4 है CS एग्जीक्यूटिव का टैक्स लॉज, राइट? हमने उसमें देखा कि लॉज कैसे बनते हैं. हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, फिर हम आए टैक्स समझा हमने, फिर टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं, तो अलग प्रकार के टैक्सेस कौन से हैं, फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि इस अलग प्रकार के टैक्सेस को जो कलेक्ट किया जाता है, ओके, उसको कौन से लिस्ट में कवर करते हैं, बराबर है? किसके कौन से पावर्स है, कौन इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता है, कौन GST कलेक्ट कर सकता है, कौन एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन कलेक्ट करता है, राइट? सो फर्दर अगेन वी सॉ दैट हाउ टू एक्चुअली रीड अ पर्टिकुलर एक्ट. किसी एक्ट को समझने के लिए हमें उसके रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉज, सब कुछ हमें स्टडी करना है. एंड ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ पढ़ते वक्त हमें इतना मजा आएगा. It is going to be an absolutely a fun-loving class. Okay? Why? Because it has a practical touch. See, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तक तो हमने टैक्स से सुना है, राइट? कभी कोई डिस्कशन में कहीं पे भी जाए तो टैक्स इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज यूज, बट टैक्स क्या होता है हम पहली बार सीखेंगे, राइट? सो इट इज लाइक, इट इज समथिंग, देयर इज नो प्री नोशन इन आवर माइंड्स, राइट? सब कुछ एकदम रॉ है, हम उस पर बनाएंगे, हम उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस सब्जेक्ट इज समथिंग, इसका पोर्शन बहुत वास्ट है. इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट. इट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग, बट अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया तो इस सब्जेक्ट जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं. Scoring and interesting. If you give your complete attention, scoring 90 marks in this paper is absolutely easy, provided you focus on clearing of the concepts of the particular important concepts which are there in the act.
ओके तो आपका फोकस रखो, आप यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अस, ओके आप पूरे विश्वास के साथ हमारे लेक्चर्स अटेंड करो और टैक्स पढ़ो, एंड देन जस्ट अटेंड करना इज नॉट नेसेसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस प्रकार से अटेंड करते हो, राइट कोई अपने लिविंग रूम में बैठ के भाई मैम का लेक्चर ऑन कर दिया है, मैम बोले जा रही है, हमारा आधा ध्यान है आधा ध्यान नहीं है, नॉट हैपनिंग, नॉट जस्ट नॉट हैपनिंग, ओके यू हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड। वो जो 1.5 घंटा आपके क्लास का है, वो 1.5 घंटा आपको पूरी तरीके से पूरे फोकस से बस एक ही चीज करनी है, वो है टैक्स पढ़ना, ओके सिट अपराइट, कीप योर राइटिंग अपैरेटस रेडी, तो सारा जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो आपके पास अवेलेबल करो, आपके पास रखो, एंड देन यू हियर दिस लेक्चर्स, एंड देन आई प्रॉमिस यू माय डियर स्टूडेंट्स, it is my guarantee that you will easily score 90 marks very, very, very easily, provided you follow all the instructions that are given to you. So, my dear students, okay, yes, and thank you very much for listening to my lecture so patiently. And if you want to buy the entire course of this paper 4 of taxation laws, you can very much go to the www.bookbylectures.com, and also आपके प्ले स्टोर में बुक बाय लेक्चर्स BML करके ऐप अवेलेबल होगा, जो you can download and then you can buy these lectures and also solve all the test series जो आपको उस ऐप पे अवेलेबल होंगी। आप हमारा YouTube चैनल भी रेफर कर सकते हैं, लॉजिकल गुरुजी बुक माय लेक्चर्स, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट नंबर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑन द स्क्रीन, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी सून एंड बिगिन दिस जर्नी, हैपनिंग जर्नी इन दिस वर्ल्ड ऑफ टैक्स along with you. Okay, BML welcomes you all, and we promise to serve our best because it is you who deserve the best. Thank you, my dear students.